Assalamualaikum everyone, and today's topic of our lecture is parts of speech. And parts of speech includes noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Okay, so first here comes the question, what is parts of speech? So parts of speech indicates how the word functions and meaning as well as grammatically within the sentence. Parts of speech actually क्या indicate करता है, what is the purpose of it, कि it actually shows the function of a word and a sentence, कि जब हम इसको sentence में use करते हैं grammatically correct हो, so what it actually perform, what is its function. An individual word can function as more than one parts of speech when used in different circumstances. एक ही word हमारे साथ एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का रोल कर सकता है जब हमारे साथ वो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट तरह से वो यूज़ हो जाए. अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एज एसेंशियल फॉर डिटर्मिनिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड. पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर अस. द बेसिक पर्पज़ इज़ कि हमें उस वर्ड के करेक्ट डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन एक्चुअली वी मीन्स द करेक्ट फंक्शन ऑफ अ वर्ड, कि हमें उसके बारे में पता लग जाए. So here comes the first one, that is noun. So noun is a word that names something, either a person, place or thing. Noun हमारे साथ क्या है? It is a naming word. जितनी भी हमारे साथ names है, जितनी भी नाम हैं, like in the universe जितनी भी चीज़ें हैं, उसके जितने नाम हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आता है? It comes in the category of noun. And these names can be of anything, can be of any person, can be of any place or idea. Nouns are often used with an article, the, a, an, but not always. Mostly हमारे साथ जो nouns हैं वो किस चीज़ के साथ यूज़ होते हैं? आर्टिकल के साथ. आर्टिकल उससे पहले यूज़ होता है. And even some of the grammarians said कि articles is just like the identity card of a noun. ठीक है, but remember it's not the case always. Like for example, if I say a cup, an umbrella. अब हमारे साथ the book. So ये हमारे साथ क्या है? आर्टिकल्स है जो हमने नाउन से पहले यूज़ की. And then proper nouns always start with a capital letter. Common nouns do not. Nouns can be singular or plural, concrete or abstract. Noun can show possession by adding apostrophe s. Different types of noun हैं. उसमें हमारे साथ जो proper noun है, it always gets start with capital letter. वो किस चीज़ से start होता है? हमेशा capital letter से ही start होता है. जबकि common noun के लिए ये ज़रूरी नहीं है. Until and unless जब हम common noun को sentence के start में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर we have to take it start from capital letter. लेकिन अगर वो sentence के दरमियान में यूज़ हुआ है so there is no need कि हम वहाँ पर capital letter के साथ इसको शुरू करें, but we can do it with small letter. अब nouns हमारे साथ singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. Along with it there are concrete noun and some are abstract noun. And yes, nouns also show possession. Possession means milkiyat, ठीक है? And how it is? By putting apostrophe s with the noun. At the end of a noun, जब हम उसके साथ apostrophe and then s put करते हैं, so वो actually ownership show करता है. Now let's talk in detail about the types of noun. So the first one is proper noun. A noun is a specific name of a person, place or thing and is always capitalized. Proper noun हमारे साथ क्या है? It is the name of a specific person. ठीक है, specific name है actually एक person का, एक place का, एक thing का, and always ये किस चीज़ से start होता है? Capital से. For example, does Tina have much homework to do this evening? अब इस सेंटेंस में हमारे साथ जो इटैलिसाइज हमने किया है दैट इज़ टेना. टेना इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल. ठीक है, अब देयर आर मैनी गर्ल्स लेकिन टेना उसमें एक है. इट इज़ अ स्पेसिफिक नेम एंड यू सी कि हमने ऑल दो इट हैज़ बीन पुट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस लेकिन फिर भी हमने उसको कैपिटल से शुरू किया है, मीन्स जो कैपिटल टी है. सो इट इज़ प्रॉपर नाउन. द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज़ कॉमन नाउन, समटाइम्स नोन is generic noun. A
A common noun is the generic name of an item in a class or group and is not capitalized unless appearing at the beginning of a sentence or in a title. कॉमन नाउन को जेनरिक नाउन भी कहते हैं. वाई? बिकॉज ये हमारे साथ बिल्कुल एक जेनरिक नेम है एक क्लास का, एक ग्रुप का, और इसको हम कैपिटल से शुरू नहीं करते अनलेस एंड अनटिल जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में शुरू यूज़ हुआ हो या किसी टाइटल में इसको हमने यूज़ किया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल क्रॉस्ड द रोड. दिस इज़ अ नाइस सेंटेंस. और अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे साथ गर्ल, it is the name of a person, ठीक है, लेकिन the fact is कि it does not show which one girl, right? So it is girl, can be any girl. So girl हमारे साथ क्या है? It is common noun and इसको हमने sentence के दरमियान में यूज़ किया है. So of course G will be small and along with it there is another noun in this sentence as well, that is river. River can be of any river, ठीक है, कोई भी river हो सकता है. So it is a common noun. Okay, so now let's talk about the types of common noun. Common noun or generic nouns can be broken down into three subtypes. First one is concrete noun, second abstract nouns, and the third one is collective nouns. Okay, so concrete noun is the name of something that is perceived by senses, something that is physical or real. For example, my keyboard is sticky. कॉन्क्रीट इज़ अ टर्म जो हमारे साथ मोस्टली कंस्ट्रक्शन के फील्ड में यूज़ होता है, ठीक है. एंड यू कैन जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड कि इट इज़ समथिंग दैट हैज़ सम शेप, ठीक है, दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील, ठीक है. सो हमारी जो 5 सेंसेस है उसको परसीव कर सकते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड कंक्रीट नाउन, जिसका कोई फिजिकल और रियल एग्जिस्टेंस हो. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ माई कीबोर्ड इज स्टिकी. अब कीबोर्ड क्या है? इट्स हैज़ अ प्रॉपर शेप दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, सो इट इज़ concrete noun. The second type of common noun is abstract noun. An abstract noun is something that cannot be perceived by the senses. Abstract means something that is ideal, that do exist in mind, that like the sort of thing, idea we can say. But that cannot be perceived by our senses, means it do not have any proper shape, जिसका कोई proper shape नहीं है, कोई concrete existence नहीं होता. For example, we cannot imagine the courage it took to do that. अब we do talk about the concept of courage, ठीक है, बहादुरी, strength, लेकिन the fact is still we do not have any proper shape of it. So courage is an abstract noun. It cannot be seen, heard or sensed in any other way, but we know it exists. हमें पता है कि this thing do exist, ये मौजूद हैं, लेकिन another fact is we cannot perceive it because it do not have any proper shape. The third type of common noun is collective noun. A collective noun denotes a group or collection of people or things. It's the very name indicate collection, ठीक है, एक मजमुआ होता है, एक ग्रुप होता है people का, things का. And this collective noun, it actually indicate a group of people or a group of things. Like for example, the flock of birds fly in the air. Now in this sentence आप देखिए flock, ठीक है, flock हमारे साथ क्या है? Means जो परिंदों का हुजूम होता है. So flock हमारे साथ क्या है? It is a collective noun. Is used here as a collective noun. Collective nouns take a singular verb as if they are one entity. In this case, the singular verb as is used. अब हमारे साथ flock of birds क्या है? It is collective noun. Now let's again talk about the types of noun. The third type of noun is countable noun. Countable nouns are nouns which can be counted. जिस तरह हमारे साथ name indicate करता है कि वो nouns जिसको हम count कर सकते हैं, जिसके अपने singular and plural मौजूद हों. For example, here is a cat. ठीक है, cat हमारे साथ क्या है? We don't know कि हाँ 1 cat, 2 cat, 3 cat या, or we can say like this cat, cats. Cat singular and cats plural. Another is uncountable noun. Uncountable noun are nouns that come in a state or quantity which is impossible to count. Uncountable वो चीज़ें जिसको हम count नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? Uncountable nouns, and they are always considered as singular.
इसको हमेशा हम सिंगुलर ही लेते हैं, मीन्स इसका जो वर्ब होता है दैट इज़ ऑलवेज सिंगुलर. फॉर एग्जांपल वाटर. अब वाटर को हम काउंट इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इसके लिए अपना एक स्टैंडर्ड वो कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई कैन से 1 glass of water, 1 jug water, ठीक है. सो इट्स समथिंग लाइक दिस. The fifth type of noun is possessive noun. Possessive nouns are nouns which possess something. They have something. Possession. Possession means ownership, मलकियत. ठीक है. सो हमारे साथ वो नाउन जो ऑनरशिप शो करते हो किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के. For example, you can identify a possessive noun by the apostrophe. Most nouns show the possessive with an apostrophe and s. अब possessive noun को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वेन एवर एट द एंड ऑफ अ नाउन हमारे साथ नाउन के एंड में हमारे साथ एपोस्ट्रफी प्लस एस पुट हुआ हो, एपोस्ट्रफी एस, सो इट मीन्स कि यहाँ पर इट शोज़ ऑनरशिप. फॉर एग्जाम्पल द किड्स टॉय वॉज मिसिंग. अब यू सी इन दिस सेंटेंस कैट्स, ठीक है, कैट एपोस्ट्रफी एस. इट मीन्स कि दिस कैट डू पोजेस समथिंग एंड इसकी ऑनरशिप में क्या है, टॉय है. सो यहाँ पर कैट पोजेस टॉय एंड वी डिनोट दिस बाय द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रफी एस.